Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of absolutism. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म इज द थियरी or a practice of absolute government, most commonly associated with an absolute monarchy. So the very important first point which help us to understand the concept of absolutism is that this theory or practice is all about supporting an absolute government. And whenever we discuss about absolute government, then most commonly it is associated with an absolute monarchy, because in any other form of the government you have other checks and balances which will always going to play a very important role in a way to control the power of the state. Whereas in monarchical system of government there are no checks and balance, and therefore king or a monarch gets this absolute power over the government. And monarch is only a system, or a monarchy is only system where probably we're gonna see an absolute government or absolutism. And therefore whenever we discuss about absolute government, most commonly it is associated with absolute monarchy. जब हम एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं या फिर इस थियरी के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, तो ये थियरी बेसिकली टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. ये थियरी इन अ वे प्रैक्टिस ओनली ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. और जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट जो होती है, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण ताकत, पूर्ण पावर, या फिर आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मतलब जिसके पास पूरी ताकत है सरकार चलाने की या फिर कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की. और अमूमन हमने देखा है मोस्ट कॉमनली कि जब भी हम एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं या फिर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये हमेशा एक एब्सोल्यूट मोनार्की में ही हमें देखने को मिलता है. और किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ें बहुत कम दिखने को मिलती है, क्योंकि दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक चेक्स एंड बैलेंस रहता है सॉवरेन का पावर कंट्रोल करने के लिए या फिर स्टेट का जो पावर रहता है वो कंट्रोल करने के लिए. लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की रहती है, यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टेकल नहीं रहता है, यहाँ पर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहता है, और इसीलिए जो सरकार चलती है मोनार्की में वो बहुत पावरफुल रहती है, उसके पास पूरे उसके पावर रहते हैं. एंड therefore moving forward, government in absolute in the sense that it possess unfettered power, means unrestricted, unlimited powers. And these powers are very important because the absolutist principles nevertheless resides in the claim to an unlimited right to rule as in divine rights, rather than in the exercise of unchallengeable power. So therefore we need to understand that in such absolute government, example in absolute monarchy, the absolute sense is stressed upon the possession of unfettered power. Here we also have to understand that when it comes to the absolute government or absolute power of the government, then it is possessed by unfettered power, unrestricted power. Nobody can restrict this power from the government. And therefore, example in monarchy form of a government, the monarch has this unfettered power, unlimited rights to rule as a divine right, because beyond that there is nobody. And therefore we have this
another one of the beautiful political theory called divine right, which basically talks about that the king or the monarch has the divine right. After the god, it is a king who is the most important authority in any state, and therefore king is directly appointed by the god, and therefore he has the divine power. So you can just imagine the immense of power which an absolute government can possess. And therefore rightly, when we talk about absolutism or when we talk about absolute form of a government, then obviously it is associated with absolute monarchy. यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, और ये चीज़ है कि जो एब्सोल्यूट सरकार बनती है, पूर्ण सरकार जो बनती है, इसके पास अनगिनत पावर रहते हैं, इसके पास अनफैटरिंग पावर रहते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर रहते हैं। और ये पावर क्यों रहते हैं? क्योंकि एक समझ है या फिर एक विश्वास है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क रहता है, ये एक अनलिमिटेड राइट टू रूल लेके पैदा होता है, और इसके पास डिवाइन राइट रहते हैं। डिवाइन राइट अगेन एसोसिएटेड विद डिवाइन थियोरी ऑफ राइट्स, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो राजा जो बनता है, इसको भगवान ने नियुक्त किया है, और बिकॉज ही इज बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड, ही हैज़ ऑल द डिवाइन राइट्स। सो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे या इसके आगे और कुछ नहीं है। राजा ही सबसे बड़ा गवर्नमेंट है, और जो भी कुछ एक किंग करेगा उसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, उसके डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसीलिए जब भी हम एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं या फिर एब्सोल्यूट सरकार की बात करते हैं, तो अमूमन ये सिर्फ हमें एब्सोल्यूट मोनार्की में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो मोनार्क रहता है उसके पास अनगिनत पावर रहते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर रहते हैं, और उसके पास एक डिवाइन राइट भी रहती है विद अनलिमिटेड राइट टू रूल। Thus, the rationalist theories of absolute power generally gives these advances and the belief that only absolute government can guarantee order and social stability. And therefore this rationalist believes that if we need an order, if we need social stability in society, then it is no other than absolute government. According to them, it is only absolute government can guarantees you that there would be an order and there would be a social stability in the society. No other form of a government or no other theory of a government can give you, or at least can give you guarantee that there would be an order and social stability. But according to them, it is only monarchy, absolute government, which again, as I said, associated with absolute monarchy, and therefore absolute government can guarantee us order and social stability. और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो रैशनलिस्ट थियरीज जो है, ये यही कहती है कि अगर आपको ऑर्डर चाहिए, अगर आपको एक सोशल स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ही हमको गारंटीज कर सकता है। एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ही हमें ये विश्वास दे सकता है कि सोसाइटीज़ में ऑर्डर रहेगा और स्टेबिलिटी रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट प्रिसाइसली absolutism as a concept talks about when it comes to the government, when it comes to the order, or when it comes to the stability. So in short, this is all about the concept of absolutism, which is a theory or a practice of absolute government, and such kind of a government you will commonly gonna see or associate it with an absolute monarchy. So this is in short all about the concept of absolutism. So I hope you have understood the concept of absolutism, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.